Hello students, welcome to our ISI 2026 most probable conceptual questions series। ये हम लोग का सेट 4 क्वेश्चंस है और सेट 3 के बाद हम लोग एक यूजीबी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि 10 मार्क्स वेटेज था और दैट इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इट्स ओके। तो इसके बाद हम लोग मैं एक चीज बोलना क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में। हम लोग ट्राई करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी 12th का है और मेरा कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी जेई मेन क्वालिफाई किए हैं एंड उसके बाद उनको एडवांस का प्रिपरेशन के वजह से मेरे को थोड़ा, और मेरा ओलंपियाड क्लास चल रहा है तो इसके वजह से मैं थोड़ा कम क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट सीरीज जब लाऊंगा तो मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन इसमें सीरीज में प्लेस करूंगा और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स और ऑल व्यूअर्स आल्सो, दोज हु आर फॉलो माय चैनल्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो लाइक एंड कमेंट। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स किए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कीप वाचिंग माय चैनल्स। ओके। सो आज का जो क्वेश्चन है, तो लेट S1 एंड S2 डिनोट द सर्कल्स। सर्कल दिया है and respectively let m be the smallest positive value of a for which the line y equal to x contains the center of the circle which touches S2 externally and S1 internally, given that m square equal to p by q where p and q are the relatively prime integers, then p plus q is how much। उसके बाद ये के क्वेश्चन के बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशंस है और टू डिस्टिंक्टली टू 0 to 1 इंटरवल के बीच में और कितना k का वैल्यू पॉसिबल होगा। देन आल्सो द कैलकुलस। आल्सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द एसेंस ऑफ कैलकुलस इज देयर एंड 4 नंबर and 5 number 4 number it is the permutation combinations and also 5 number is the also essence of the trigonometric summation series। Okay, let us solve the question number 1। okay, सो फर्स्ट सर्कल का, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, तो पहले जो S1 सर्कल दिया है उसका सेंटर पहले निकालो। सेंटर क्या होगा ना, -5, 12। सो इसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट हाउ टू फाइंड द सेंटर्स। सो ये 5 and 12 होगा। सो एक्चुअली इक्वेशंस क्या होता है, x² + y² +2gx +2fy +c = 0। इसमें सेंटर होगा -g एंड -f। ओके। एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा तुम्हारा g² + f² - c का अंडर रूट। ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस general equation of circle we can find the centers। Now, R1 for the circle case 1, it is R1 equal to 16 and R2 equal to 4. Okay. So, C1, C2 का जो डिस्टेंस है, C2 का डिस्टेंस है, it is R plus 4. Okay, where C is the center of the circle touching C2 externally, जो C जो सर्कल में ले रहा हूं, so C क्या होगा, where C is the center of circle touching C2 externally, C2 externally and C1 internally. It is condition given on the question paper. Okay. So C1 again it should be 16 minus R. Okay, 16 minus R. So S2 contained by S1. Okay, so now CC1 plus CC2, it should be 20. Then locus of C
is the ellipse. Ellipse with foci at C1 with foci at C1 and C2, and the length of the major axis is also 20. From this locus, you know that this is the locus, and the locus of C is x square by 100 plus y minus 12 whole square divided by 75 equal to 1. So this is the equation 1. According to the equation, so y equal to ax is tangent to the ellipse, So ellipse from 0 0 origin से y equal to mx plus c, so y intercept is 0, so that's why it is. So equation of tangent to this ellipse to 1, equation 1 is y minus 12 equal to mx plus 100 m square plus 75. This is the condition y equal to mx plus c, the tangent condition to the ellipse. Okay, but this passing through 0 0 0, but this tangent passing through 0 0. स्टेप वाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन करेंगे तो आराम से इसका आंसर्स निकल जाएगा. सो इट शुड बी minus 12 equal to mx, it is also 0. So under root of 100 m square plus 75, squaring both the sides again, so we get 144 minus 75, so it is m square equal to 69 over 100. So then it is p plus q equal to 169. So 169. So this answer, from this we have to find the answer that 169 answer is A. ओके, तो क्वेश्चंस में इसमें हम लोग क्या किए कि उसका सेंटर लोकेट करो, फिर उसका रेडियस निकालो, फिर हम लोग सेंटर का डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, फिर लोकस निकाल के इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं और टेंजेंट बनाते हैं. तो ये एक बहुत मल्टीपल इसमें कंसेप्ट नहीं लगा है, सिंपल हम लोग दो कंसेप्ट में ही काम कर रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 also we have to try. Question number 2 solution. So let there be a value of k for which x cube minus 3x plus k equal to 0. Let there be a value. Let there be a value of k. So this equation has two distinct roots.
two distinct roots between 0 and 1. Between 0 and 1. Okay. So let A, B be two distinct roots. Supposed to be let A, B are two distinct roots. Distinct roots. Laying between 0 to 1. Laying between 0 to 1 supposed to be. So now f of A equal to f of B also it should be 0. Then we have to derivative that equation f dash x. So derivative differentiate it. F dash x should be 3x cube minus 3. And it has 3x square. Okay, 3 x square 3x square minus 3. It has at least one root between 1 between A and B. Okay. Now f dash x equal to 0. Now it should be f dash x equal to 0. Has two equal roots. Has two equal roots. It is the x equal to plus minus 1. Okay, which do not lie between A and B. Which do not lie between A and B. Okay. So f of x equal to 0, f of x equal to 0 has no real roots laying between 0 and 1 for every value of k. So answer is, we have to find out the answers. Question number 2, no value of k satisfy the requirements. Requirements के हिसाब से और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो इसमें नो वैल्यू दिखा रहा है. ओके, नो values. Then we should go for the question number 3. Okay. So question number 3 also it is the calculus again. So f double dash x equal to f dash x. Okay. Now we have to divide f double dash x over f dash x equal to 1. If we integration of f double dash x over f dash x equal to into dx, so we can write it is f dash x equal to c times e to the power x. C equal to any integrating constant. So f of x should be c e to the power x plus t. So now but f of 0 should 1 and then c plus d also equal to 1. Now f of x should be c into e to the power x plus 1 minus c. So now f dash x equal to c e to the power x, and putting in the f dash x also. So f dash x equal to f of x plus integration of 0 to 1 f of x into dx. Okay. So now it is c e to the power x
equal to that should be the c e to the power x plus 1 minus c plus integration of 0 to 1. It is c e to the power x plus 1 minus c. It is c e to the power x into dx. So c equal to 2 over 3 minus e. So f of x. So f of x equal to 2 e to the power x minus e plus 1 divided by 3 minus e. Okay. Now, the option should be 2 e to the power x. It should be a. Okay. Option should be a. Next, a staircase has a 10 steps. A person can go up the steps one at a time and two at a time, or any combination of one or twos, and the number of ways in which the person can go up to stairs. Okay. So this is the permutation combination. So from the question number 4, it is should be x plus 2y equal to 10, where x is the number of times he takes single steps and y is the number of times he takes two steps. Okay. So here three cases arises. Case 1, supposed to be x equal to 0 and y equal to 5. It should be 10. So total number of ways equal to 5 factorial over 5 factorial equal to 1. Case 2, so it is x equal to 2 and y equal to x equal to 2, y equal to 4, y equal to 4. So now the total number of ways equal to 6 factorial divided by 2 factorial into 4 factorial. It should be 15. Now case 3 arises. Case 3. So we can write x equal to 4 and y equal to 3. Then it is sum is 10. It is very so simple. There is no confusion. So this should be the 7 factorial over 4 factorial into 3 factorial. That should be 35. Okay. So option should be A is here. Total option A 89. Okay. Option A is the 89. Then if x equal to x belongs to 0 to pi by 2, it is in the first quadrant. So cos x equal to 1 by 3. Then the value of sum of n equal to 0 to infinity cos nx by 3 to the power n equal to how much? Let's see equal to question number 5, last number, and let's see c equal to 1 plus
cos x by 3 plus cos 2x over 3 square, so on. Okay. Let and s equal to sin x by 3 plus sin 2x by 3 square plus up to so on. So c plus is iota I times s equal to 1 plus e to the power iota times x by 3 plus e to the power I times 2x divided by 3 square, so on. So now infinity sum is there. So c plus iota times s equal to 1 minus e to the power iota times x by 3. So it is should be 3 by 3 minus cos x into plus I sin x. So it is sum of s infinity. I am putting this formula a by 1 minus r. 1 minus r. So this is the formula we have to put. Then comparing the real parts. Comparing the real parts. We get it is should be 3 whole into 3 minus cos x whole divided by 3 minus cos x whole square plus sin square x. So it should be c gives us 1. So for cos x equal to 1 by 3. So what is c equal to 1? So that means we have to find the value. It is a. A is the correct option. ऑल्सो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लाएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से हम लोग का आएगा जेई एडवांस का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और इसका यूजीबी का क्वेश्चंस और यूजीए का क्वेश्चंस हम लोग इसमें डालेंगे टाइम टू टाइम. Again, request to all the students and viewers, those who are following my channel, please subscribe and also comment us. That will encourage me very much. Thank you.